Welcome back to my channel. In this video, we will explore how this world is a deception and everything in it is temporary. How depression and mental health crises are on the rise. The disturbing activities on the dark web. The harsh reality of human trafficking and child exploitation. The concept of the self, nafs and human choices in the light of Islam, and why despite having limitless wealth and comfort, people still don't find peace, where factors like hedonic addictions, the income happiness plateau, materialism, social comparison, and loneliness play a major role. Number one, the deception of this world. This life in the world is just a test. It is not a permanent. The Quran says the life of this world is only deception. Surah Al-Imran 3185. Allah made death and life to test who does good deeds. Surah Al-Mulk. Even though the world looks beautiful, it is only for short time. Real life is in the hereafter. You know everything and about it. The second, human limits and nafs and desire. When a person has no control over his nafs desires, he can even harm his own daughter, sister, or wife. You can't imagine. You know, when a person has no control over his nafs desire, he can even harm his own daughter, sister, or wife, etc. Islam teaches us live in this world like a traveler or a stranger. This means don't get too attached to the world. It is temporary. The real life is after death, in the hereafter. You know very well. But my friends, यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है. You know, there are things happening on the internet that you can't even imagine. So many disgusting and shameless activities are going on there. You can't imagine the level of filth from a drug supply to every kind of illegal business. Everything happens online, but I don't think you know much about it. So I will tell you something about what really happens on the hidden part of the internet, which we call the dark web. This information about dark web only for your knowledge, so please don't try to bring this into your life. So I hope you got it. The dark web is a hidden part of the internet. You need a special browser like a Tor to open it. Many criminals use the dark web to do bad things secretly. You know, Silk Road 2008 and 2013, drugs like heroin and cocaine were sold here using Bitcoin. The FBI caught the man who made it Ross Albert and Federal Market 2015 to 2022, had 17 million users and did business of more than 5 billion. It was shut down in 2022. These are the dark web secret, you know. Child exploitation and human trafficking. A dark website called Playpen had over 20 million users. It was used to exploit children. The FBI shut it down in 2015. Human trafficking is a big illegal business. It makes 172.6 billion every year. Around 49.6 million people are living like slaves, including 12 million children. Cyber sex trafficking trap around 6.3 million people, including 1.7 million children. This is the sad truth of money and inner peace. दोस्तों, आज के टाइम में लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है. आखिर क्यों? The first point, hedonic addictions. Hedonic addiction का मतलब यानी नया फोन या कार लेने के बाद थोड़ी देर खुशी मिलती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज नॉर्मल लगने लगती है. You know, आपने देखा होगा जब आदमी कोई भी चीज खरीदता है, उसके बाद उसको वो बहुत ज्यादा खुशी फील करता है. हम लग्जरी की आदत यानी उस चीज को लेने के बाद डाल लेते हैं, लेकिन सुकून वापस चला जाता है. दिस इज कॉल्ड हेडोनिक एडिक्शंस. स्टर्लिंग पैराडॉक्स. जब इनकम बढ़ती है तो लगता है कि खुशी भी बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल के बाद ज्यादा पैसा भी खुशी नहीं देता. दिस इज फैक्ट. यू नो, इनकम हैप्पीनेस प्लेट्यू. रिसर्च कहता है कि $75,000 ईयर तक लोगों की एवरीडे हैप्पीनेस बढ़ती है. उसके बाद जितना भी पैसा कमा लो, रियल खुशी नहीं मिलती. मींस $75,000 तक लोगों की एवरीडे हैप्पीनेस बढ़ती है.
उसके बाद आप जितना भी पैसा कमा लो, रियल खुशी नहीं मिलती। फिर इंसान वो पीस की तरफ भागता है कि मुझे किसी तरह सुकून मिल जाए, बट वो उस चीज को नहीं जानता कि इन सब चीजों में सुकून नहीं है। पैसा आदमी एक हद तक कमाएगा, उसको ये नहीं लगता कि आदमी ये सोचता है कि जो है उसके पास पैसा आने के बाद भी उसको लगता है कि जब मेरे पास मनी आ जाएगी तो मुझको बहुत सुकून मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक इनकम हैप्पीनेस प्लेट्यू है। मेटेरियलिज्म, ज्यादा शॉपिंग या चीजें खरीदने से सिर्फ टेम्परेरी खुशी मिलती है, लेकिन अंदर से सुकून और पर्पस नहीं मिलता। ये भी एक फैक्ट है। सोशल मीडिया कंपैरिजन, जब हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो लगता है कि हम पीछे हैं, और यही फीलिंग डिप्रेशन का रीजन बन जाती है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हम लोगों को ये लगता है कि एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है और वी कैन डू लाइक दिस, हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया पे मोस्टली लाइफ फेक होती है, बट हम लोग नहीं जानते। डिप्रेशन अमंग द रिच, सोचो जो लोग सक्सेसफुल है, करोड़पति हैं, वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सुकून सिर्फ पैसों से नहीं आता। लॉनलीनेस, चाहे पैसा हो, लग्जरी हो, फ्रीडम हो, अगर आपके पास रियल रिलेशनशिप्स या स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड नहीं है तो अंदर से आप अकेले फील करोगे। दिस इज कॉल्ड फैक्ट। अगर आपके पास जितना चाहे पैसा हो, फ्रीडम हो, लेकिन अगर आपके पास एक बेस्ट रिलेशनशिप, रियल रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड नहीं है, सो आप फील नहीं अच्छा करोगे, आपको डिप्रेशन में वो चीज ले जाएगी, आपको वो पीस नहीं मिल पाएगा। सो दीज ऑल द फैक्ट you should know about it. पैसा ही सब कुछ नहीं है. Money is a tool, not the goal. For true peace, we need purpose, relationships, and spiritual growth. Human limits and nafs desires. When a person has no control over his nafs desires, he can even harm his own daughter, sister, or wife. Islam teaches us, live in this world like a traveler or a stranger. This means don't get too attached to the world. It is temporary. The real life is after death. Real life हमारी यहाँ नहीं है. The Muslim community इस बात को अच्छे से जानती है कि real life यहाँ नहीं है. You will see the real life in the hereafter. So you have to prepare yourself for there. This world is temporary and full of distraction, money, power and sins, all or not forever. ये सब एक हमेशा के लिए नहीं है. This is called temporary. ये सब चीजें temporary हैं. Full of distraction है, money, power and sins. यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं. But Allah has given us a free will. We must choose. Do we follow the right path or get lost in the world? Daily habits for peace and growth. Write 3 things you are thankful for every morning or night. This helps in feeling happy and positive. Study by Emmons and McCullough 2003. You can read like this. Physical activity 30 minutes daily. Walk, exercise or play. It reduces sadness, improves sleep and memory. WHO recommendation. Read the Quran and remember Allah. Remember me, I will remember you. The God says in the Quran. Morning and evening zikr bring peace to the heart. Helping others, do community service or help someone, it reduces loneliness and increases happiness. Digital detox, limit social media, use Facebook, Instagram, TikTok for any 30 minutes day. This is enough. Less screen time, less sadness and more peace. ये सब चीजें बहुत ही effectful है in your life. Learning new skill or language daily, it keeps the brain sharp and improves focus. Friends, now you understand this world is not everything, but peace and personal growth are possible if we make the right choice. Allah give us freedom to choose, so choose wisely. If you like this video, please like, share and subscribe.